Today we'll continue with that discussion, and then we'll move on to the concept of multi-layered perceptrons. So before we actually start with our discussion, if you have any questions, you can raise your voice and ask any question if you have, right? So I'll just be waiting for some questions, and if there are any questions, just okay. Yes, I'll definitely recap some of the stuff that we did last time, and then we'll move on to the extension of what we did last time, right? Okay, so what we did last time was perceptron learning, where we said that perceptron learning is primarily the very basic learning algorithm that is used in machine learning. It's inspired by biological neurons that you have in your nervous system. And we discussed about the basic structure of a neuron. And then we said that, okay, there are fundamentally, there are three processes that are taking place inside a neuron. And those processes that take place inside the mathematical approximation of those processes is that, first of all, the inputs that come to a neuron through the dendritic tree, that input is weighted, and that means that the input is multiplied with some weights depending upon the importance of those inputs. Then an aggregation takes place. That means that if a mathematical representation of the same has to be done, that would be the addition of those weighted inputs. And once that aggregation is done, the third thing that takes place is some sort of a thresholding. And that thresholding is modeled with the help of a function. And that could be a soft threshold or a hard threshold. A hard threshold would be just like a step function, that for a given value of the weighted inputs, the aggregated weighted inputs, the value would either go to 1, or the output of a neuron could either go to 1 or it would remain 0. So the value that comes out of a neuron, that varies between, or that is either 0 or 1. That is the case when you have the hard thresholding. And if you have a soft thresholding, that means that if you replace this step function with a sigmoidal function or a continuous function, then the output could vary between 0 and 1 also. So the output could also be 0.2 or 0.3 or 0.8 or 0.9. It could be anything on that on that curve which you have in case of a sigmoidal function. Okay, so why do we have this thresholding? The reason that we have this thresholding in case of perceptron, in term which is a mathematical representation of a biological neuron. The reason that we have this sort of a thresholding, why do we want that the output could be 0 or 1? Because we are using this learning for classification. We are not using for predicting a value. Now, the difference between predicting a value and classification is that in case of classification, you want to categorize your inputs that are coming in into categories and saying that, okay, this input belongs to this category and another set of inputs belongs to this category. You are not predicting an output value. You are only predicting an output class. That's what
And that's what you have in case of perceptron learning or classification. In case of predictions, you are predicting your output value. So, for example, if you want to predict that what is the temperature or what will be the temperature tomorrow if the humidity value is given, and if the cloud cover is given or not, whether what would be the temperature tomorrow. So you are predicting a value of temperature here. So this falls under the category of this is not classification problem. This falls under regression problem or some sort of prediction problem. Whereas in case of classification problem, we are not predicting the exact value, we are predicting the class. So for example, we want to predict whether it would be overcast tomorrow or not, right? So the answer would be in yes or no. Therefore, we have some sort of thresholding that would give you a 0 value or a 1 value. 1 would represent that it would be overcast. 0 would represent that it won't be overcast. So here is the difference between standard prediction and the classification. So fundamentally, perceptrons are used for classification, not for prediction. If you want to do predictions, then there are other ways of doing predictions. For example, you can do regression analysis, logistic regression or linear regression, where you are actually predicting a value. Okay, so so that's primarily the difference between classification and prediction. So here we are doing classification, we are not doing prediction. Therefore, some sort of thresholding is required in this particular case to identify a category. So if it is okay. Yes, I'll come to this, Roshan, the question which you have asked. Once we'll move on to the multiple thresholding part, or the multiple neurons when we connect multiple neurons together. So just to recap, so this was the type of thing that we discussed last time. So we said that okay, we said that okay, the thresholding that we can apply, that could be hard thresholding. That means that it could be 0 or 1, and that 0-1 thresholding is generally used for binary classification when you have two classes to predict. And if you have multiple classes to predict, then in that case we can have multiple neurons connected together, and that would be known as the MLP or multi-layered perceptrons, right? So multi-layered perceptrons are primarily can be used. Acha, Hamza has asked a question whether we can use sigmoidal thresholding for multi-class problems only. The answer is that no, you can use sigmoidal thresholding even for binary class, and the reason and the way that you can use this sigmoidal thresholding for binary classification is that you know that in case of a sigmoidal function, the point of inflection, that means that where this function actually changes its shape, that is generally if you have a symmetrical sort of a representation of sigmoidal function, that in that inflection point comes at a value of 0.5 on the y-axis. That means that the center point is around 0.5. So a value less than 0.5 could be categorized in one class, and a value above 0.5 could be categorized in another class. Okay, so sigmoidal function को भी आप यूज कर सकते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी या 0.5 और 1 के दरमियान होगी, दैट वुड बी वन क्लास, और 0.1 और 0 और 0.5 के दरमियान होगी, दैट वुड बी अनदर क्लास. I'll just try to explain that with the help of a simple example. Now this is an important question, so I would like to explain it a little bit. Just bear with me a second. Right, okay.
Okay, so so for example, if I'm using a sigmoidal function, um, I'll just share the screen with you. And right, so in case of a sigmoidal function, this is the type of function that you have. Okay. Okay, and this point is the point of inflection. So you can see that the slope is actually changing here. Here you have 1 and here you have 0 on the y-axis, and on the x-axis you have got this weighted input that we have got, right? So let's say कि ये inflection point 0.5 के ऊपर आता है, ठीक है? So we'll say that if the value of your output is in this region, we'll say that this is, let's say, class 1. Or if the value is in this region, we'll say that this is class 2, right? So you can use this sigmoidal function also for binary classification. और इसमें जो आप threshold कर रहे होंगे वो anything above 0.5 or anything less than 0.5, that would be the thresholding that will be done in this particular case, right? I hope this clarifies. Okay, so okay, so right. So yes, so if you are at 0.5, that means you are unable to decide anything. Okay, so that is very similar to being on the decision boundary, right? Or that on the line. So if the value is on the line, that means that you are unable to decide. So 0.5 is very similar to having a probability of 0.5 of belonging to a particular class. Okay, so therefore you can't really do anything about that. So the classifier will actually will not be able to classify anything if the value is right here at 0.5, right? So that is right at the boundary. So you are sitting at the boundary. You are not in one category or the other category. Yes, Hamza, you are right that this is similar to hard thresholding. So if it is a binary problem, you have to convert it into hard. Otherwise, it would be difficult to classify. ठीक है? For multi-class problem, हाँ, अगर एक दो से ज़्यादा classes हैं तो फिर वो issues आते हैं. ठीक है? कि जिसमें आपको hard thresholding नहीं करनी. I mean hard thresholding आपको नहीं करनी पड़ेगी. So this is similar to hard thresholding. Okay, coming to our discussion, we said that, okay, just to recap, so you have one neuron and you have got multiple inputs that come in. Okay, so let's say that you have got X inputs that are there. Okay, X inputs that are N inputs that are coming in, and you have got one output that is the output of your perceptron. And if I want to, let's say, represent this in the form of a graph, binary problem ke taur pe, so let's say you have one class here that is represented by these circles, and you have another class here that is represented by these crosses, right? So this perceptron is primarily giving you a line between these two classes, right? So this would ideally, when you learn a perceptron, this would give you this line. This line in case of a perceptron is known as a decision boundary, right? So we'll call it a decision boundary. If you are on the decision boundary, the value, the output will be 0. Okay? And if you are above this decision boundary, you are in one class. If you are below this decision boundary, you are in another class. So that's why we have said that, okay, sigma w t x, if it is greater than 0, that is that if you are above this line, you are in one class. If you are below this line, you are in the other class. And if you are on the line, you are in no class. That means that you will not be able to classify anything. So this is called the decision boundary. Whereas if you are solving a regression problem, this would be known as a regression line. So this is different from here. So how would
classification would work that you will find out कि आप किस region में हैं, either you are on the line or below the line, ठीक है. और अगर इसी को मैं let's say regression problem के तौर पे देखूंगा, तो then I'll be predicting my output, जो मेरे पास output आ रही है, I'll be predicting that. So let's say if I want to predict a given value, so I'll against a given value of my input, I'll find कि वो x axis को कहाँ पे touch करती है और वहाँ से मैं इसकी y axis की value को output कर दूंगा. This will happen in case of regression, but in case of classification, this line is primarily called a decision line, and you only find out कि whether you are above the decision line or below the decision line. ठीक है, इसमें आप value predict नहीं कर रहे, बल्कि region of your presence of your input predict करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, no, it's not necessary. Saad have actually asked a question कि यार decision boundary से ऊपर और नीचे equal number of points होते हैं. The answer is no, it's not necessary. ऊपर और नीचे दोनों तरह से different number of points different हो सकते हैं. If the number of points for each class are same, we call it a balanced problem. Otherwise, it's an unbalanced problem. So generally in real world, you have unbalanced problems. That means कि आपके पास जो number of points present होते हैं in each class, they are quite I mean they are different in number, so it's not necessary कि ऊपर नीचे एक ही जैसे points. अच्छा, so this is what a single neuron would do. Okay, so what happens अगर मेरे पास कुछ problem इस तरह से आ जाए. Let's say I'll just draw this. मेरे पास एक problem है जिसमें again it's a binary problem. So let's say कि मेरे पास ये इस तरह से कुछ data distribution, ठीक है, और दूसरी क्लास मेरे पास ये x एक्सिस की क्लास है, ये कुछ इस तरह से. अब इस केस के अंदर you can see कि if I have a single perceptron here, a single neuron here, right, so that would give you a line, single decision boundary, ठीक है. और ये सिंगल डिसीजन बाउंड्री अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो यू विल नॉट बी एबल टू कोई एक सिंगल लाइन जो है वो इन दो क्लासेस को सेपरेट आउट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल आई कैन हैव लेट्स से इफ आई कैन ड्रॉ अ लाइन हियर, एक परसेप्ट्रॉन मुझे ये लाइन दे रहा है, ठीक है. तो यू कैन सी के अबव एंड बिलो दिस, अबव तो ठीक है, आपके पास एक क्लास आ रही है, लेकिन बिलो दिस लाइन अब आपके पास दोनों क्लासेस मिक्स हो रही हैं, राइट. सो देयरफॉर आई विल हैव टू हैव अ सेकंड लाइन, अ सेकंड डिसीजन बाउंड्री, और वो सेकंड डिसीजन बाउंड्री मुझे ये यहाँ पे कहीं पे वो लाइन लेट्स से कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. आई कैन ड्रॉ अ लाइन समवेयर हियर and this would tell me कि हाँ अब so here I have decision boundary. I'll say that this is decision boundary 2 and this is decision boundary 1. So decision boundary 2 and decision boundary 1, ये दो decision boundaries मेरे पास आ गई हैं, and now I'll combine these two decision boundaries to decide कि कौन सी class है. So you can very easily see कि एक decision boundary 1 और decision boundary 2 दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों से ऊपर जो है दैट इज क्लास ऑफ सर्कल्स, और दोनों के नीचे जो है दैट वुड बी क्लास ऑफ क्रॉसेस हेयर, ठीक है. सो वी कैन हैव, सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर एट टाइम्स यू कैन नॉट हैव अ सिंगल डिसीजन बाउंड्री, और अगर सिंगल डिसीजन बाउंड्री आपके पास नहीं आ सकती तो देन इन दैट मींस दैट यू विल हैव टू एक्चुअली add another decision boundary. So just to recap, single perceptron जो है that gives you one decision boundary. So if I want to have two decision boundaries, I'll have to add another perceptron here. Whereas one perceptron would represent one decision boundary and the other perceptron would have another decision boundary. So what you can say, my network in this particular case would look like this. So I'll have x1 to xn, and I'll have one neuron, right? I'll have one neuron, and then I'll have another neuron.
सो सारी इनपुट्स एक न्यूरॉन को भी जा रही हैं और यही सारी इनपुट्स दूसरे न्यूरॉन को भी आ रही हैं, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल इनपुट्स दैट आर कमिंग इनटू दीस न्यूरॉन्स. ओके, एंड देन these are the two lines. so ये न्यूरॉन एक जो है वो लाइन जनरेट करेगा और दूसरा न्यूरॉन एक और लाइन जनरेट करेगा, एंड देन आई विल हैव टू कंबाइन दीज टू टुगेदर अगेन इन ऑर्डर टू कम अप विद अ सिंगल डिसीजन, ठीक है. सो इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके आई विल हैव टू हैव a single decision. So what would happen is that I'll again do an aggregation of these two, a linear combination of these two, to predict a single output in this case. Okay, so here I have two neurons plus another neuron here. These two neurons would generate those two decision boundaries, and this neuron will combine those two decision boundaries together. So जैसे if you go to this example here, you cannot make a decision by looking at only one decision boundary. You have to look at the other decision boundaries. So basically both these decision boundaries have to be combined together, okay? And that combination has to be a linear combination, and that linear combination is represented by the addition of this neuron here. So this neuron would exactly do the same thing जो कि ये neurons कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो input होगी that would be the output of these two neurons. जो भी इनकी output आ रही है, उन outputs को आप weighted sum of these outputs of these two neurons plus aggregation plus some sort of thresholding would be done in order to decide. So ये part जो है that is your standard part, ये part जो है that is your linear combination. We call it a linear combination of the two neurons. So a linear combination of these two neurons will take place here, ठीक है जी. And this is what is happening in case of a perceptron learning. So now this perceptron is not a single perceptron anymore. This is a combination of multiple perceptrons. Therefore, we call it multi-layered perceptron. Okay, so MLPs. So MLP. So this is a multi-layered perceptron. Why layered perceptron? Because we call this as one layer, and then we call this as another layer. ठीक है. सो इसको हम एक लेयर कहते हैं, दिस इज द सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर के अंदर एक न्यूरॉन है, फर्स्ट लेयर के अंदर दो न्यूरॉन्स हैं. आई कैन जनरलाइज दिस. लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो आई कैन हैव अ मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन ऑफ दिस फॉर्म. लेट्स से कि x1 से मेरे पास xn तक इनपुट्स हैं, एंड हियर आई कैन हैव, लेट्स से कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ सकती है तो आई कैन हैव लेट्स से m neurons sitting here, and then I can have, let's say कि मेरे पास एक linear combination of all these आ जाए, and that would be a single. So I have a hidden layer, I have a layer here with m neurons. So that is also a generalization, ठीक है. So I can have multiple neurons combined together. So हर neuron के अंदर जो है वो same inputs जा रही होंगी, सारी इनपुट्स जो हैं वो हर न्यूरॉन में जा रही होंगी. सो दिस वुड बी नोन एज अ फुली कनेक्टेड मल्टीलेयर्ड परसेप्ट्रॉन. फुली कनेक्टेड क्योंकि हर न्यूरॉन के अंदर सेम नंबर ऑफ इनपुट्स जा रही हैं, बट देयर वेट्स विल बी डिफरेंट. यहाँ पे ऑब्वियसली द थिंग दैट वुड हैपन हियर इज दैट द वेट्स वुड बी डिफरेंट इन दिस केस. सो यहाँ पे जो x1 का वेट न्यूरॉन 1 में आ रहा है उसका वेट डिफरेंट होगा. दैट मीन्स कि ये जो W11 है, this would be different, right? So this would be different, right? So और x1 का जो वेट है जो कि उसको mth न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसका वेट जो है वो डिफरेंट, right? So that weight will be different. So the weights will be different obviously, ठीक है. लेकिन लेकिन what will happen is that
एंड आई विल शो यू एन एग्जांपल कि जिससे ये मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए कि व्हाई डू वी हैव दीज लेयर. सो एक तो रीज़न वो है कि व्हेन योर प्रॉब्लम इज नॉन लीनियर इन नेचर, in that case you can have let's say these number of neurons together, multiple neurons which are connected together. Acha, now the number of neurons that you can have in this layer, ye maine m likha hai, so that means that that's actually your choice. कि समटाइम्स अ प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लेक्स कि आपके पास दो न्यूरॉन्स से काम चल सकता है. इफ इट इज सिंपल, इफ इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो देन यू माइट हैव मोर न्यूरॉन्स. आई मीन दिस वुड डिपेंड कि आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस कितनी कैसी है. बट देयर इजंट एनी मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ प्रूवन सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन जिससे आप ये निकाल सकें कि कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, ये m की वैल्यू क्या होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज Uh, which which is difficult to assess. I mean, this is not that easy to assess, right? So generally hit and trial methods आप use करते हैं. अच्छा, so what happens is कि आप ये मेरे पास एक मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन है विद अ सिंगल लेयर. यहाँ पे सिंगल लेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आउटपुट को और इनपुट को नॉर्मली हम आउटपुट को आप लेयर्स में ऐड कर लेते हैं, इनपुट्स को आप लेयर में ऐड नहीं करते. तो लेट्स से कि मैं अगर इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्किटेक्चर, तो आई विल से कि दिस इज एन एमएलपी और अ न्यूरल नेटवर्क विद टू लेयर्स और वन हिडन लेयर है इसमें. सो दिस लेयर हेयर जहाँ पे आपके पास m न्यूरॉन्स हैं, वी कॉल दिस एज हिडन लेयर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हिडन लेयर. So why it is a two layered network? It's called a two layered network क्योंकि इसमें एक output layer भी है. So we call this as the output layer. अब क्योंकि हम मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट लेयर के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूरॉन हो. अब आउटपुट के ऊपर भी आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स आ सकते हैं. सो दिस इज योर हिडन लेयर एंड दिस इज योर आउटपुट लेयर. सो अगर आप इनपुट लेयर को भी डेफिनेशन में शामिल कर लें तो देन इट वुड बी अ थ्री लेयर्ड नेटवर्क. ठीक है, लेकिन जनरली इनपुट लेयर को आप इसके नॉमेनक्लेचर में ऐड नहीं करते, तो आप हिडन लेयर्स की बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं. तो हिडन लेयर के केस में दिस इज अ सिंगल हिडन लेयर नेटवर्क, सिंगल हिडन लेयर. सो एक हिडन लेयर है इसके अंदर. ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स, और मल्टीपल हिडन लेयर्स का मतलब ये है कि आपका जो आर्किटेक्चर बन सकता है न्यूरॉन का, वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि लेट्स से कि आपके पास x1 है एंड देन यू हैव xn these inputs, और एक लेयर मेरे पास न्यूरॉन्स की ये है जिसमें आई हैव गॉट m न्यूरॉन्स, और उसके बाद आई कैन ऐड अनदर लेयर that could have p neurons, and then I could have other layer that could have q neurons, and then finally I could have and my output layer which would have, let's say, o neurons. ठीक है, so all of these are connected together. ठीक है, so this sort of an architecture is possible. This would be in this setting you have got three hidden layers. ठीक है, आपके पास एक हिडन लेयर ये है, एक ये है और एक ये है, और एक आपके पास आउटपुट लेयर आ जाती है. अच्छा, ये आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों है? इस आर्किटेक्चर की जरूरत इसलिए पेश आती है, तो आई विल जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड होपफुली दिस एग्जांपल वुड क्लैरिफाई कि आपको ये मल्टीपल हिडन लेयर्स की जरूरत क्या है. ठीक है, सो लेट्स से कि मैं एक प्रॉब्लम है जिसमें मैंने कैरेक्टर रिकग्निशन करनी है. आई मीन अल्फाबेट की भी एग्जांपल दे सकते हैं, नंबर रिकग्निशन करनी है, और मेरे पास नंबर्स हैं, हैंड रिटन नंबर, हैंड रिटन भी नहीं है, लेट्स से टाइप्ड है. तो 1 0 से 9 तक मेरे पास नंबर्स हैं, एंड आई वांट टू डेवलप अ सिस्टम जो कि इनको रिकग्नाइज कर सके कि क्या ये 0 है या 1 है या 2 है. अगर इनपुट के ऊपर मैं एक इमेज देता हूँ ऑफ दीज नंबर्स, तो आउटपुट्स के ऊपर मुझे एक रिकग्निशन चाहिए कि ये कौन सा नंबर है, किसकी इनपुट है. तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास इनपुट्स आ जाएंगी एंड दैट वुड बी, लेट्स से, द पिक्सेल्स दैट आर कमिंग इन. ठीक है, पिक्सल वैल्यू आपके पास आ जाएगी आपकी इमेज के अंदर से. फिर मेरे पास एक हिडन लेयर आ गई, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे. ठीक है, अच्छा, ये पहली हिडन लेयर और उसके बाद दूसरी हिडन लेयर और फिर उसके बाद तीसरी हिडन लेयर, दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन डिसाइड कि ये कितने हो सकते हैं. लेट्स से कि मैं
अगर ये हैंड रिटन है, अगर अगर ये फॉर एग्जांपल अगर टाइप भी हो उसके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन हैंड रिटन के लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेट्स से कि अगर ये टाइप है आपके पास, तो यू हैव लेट्स से 1 or 2 is generally written as this, then you have let's say 3 which is written like this, and then you have 4, right, and then you have 5 is form. So let's just take this example कि ये मल्टी लेयर्स कर क्या रही होती है। अच्छा, इस मल्टी लेयर के अंदर लेट्स से कि ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला जो सबसे पहला न्यूरॉन है, ये हो सकता है कि एंड आई जस्ट राइट इट इन ब्लू हियर ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। सो लेट्स से कि ये एक न्यूरॉन जो है, ये इस तरह के जब इनपुट आती है, फर्ज करें एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब आपके अल्फाबेट में आती है, इट वुड ओनली रिकॉग्नाइज दिस। इसमें एक और न्यूरॉन होगा लेट्स से जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेट्स से अगर इस तरह की लाइन आती है तो फिर ये न्यूरॉन अपनी आउटपुट देगा, अदरवाइज ये न्यूरॉन अपनी आउटपुट नहीं देगा। ये न्यूरॉन उस वक्त आउटपुट देगा जब आपके पास एक वर्टिकल लाइन आती है, ये आपके पास उस वक्त आउटपुट देगा जब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ठीक है। और फिर लेट्स से कि इसके आगे अगर मैं एक न्यूरॉन लगाता हूँ और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक न्यूरॉन है जो कि इन दोनों को लीनियरली कंबाइन कर रहा है, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके एक शेप बनेगी, और इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके हो सकता है ये वाला न्यूरॉन उस वक्त फायर हो जब ये दोनों लाइंस इस तरीके से कंबाइन, ठीक है। और यहाँ पे एक और न्यूरॉन हो सकता है वो उस वक्त फायर हो जब ये दोनों लाइंस इस तरीके से कंबाइन हो, राइट। तो इन दोनों लाइंस की लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी हो सकती, और इन दोनों न्यूरॉन्स की जो आउटपुट है विच इज अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी हो सकती। तो ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे कि यहाँ पे और यहाँ पे लेट्स से कि मैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये 4 में आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास 5 में आ रहा है। लेट्स से कि मैं 4 में देखूं तो ये वाला जो पार्ट है ऑफ 4, दिस पार्ट ओनली, दैट इज व्हाट दिस न्यूरॉन इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इन 5, अगर ये वाला पार्ट आप देखें 5 का, ठीक है, तो दैट इज प्रेजेंट इन 5। तो यू कैन सी कि अगर मेरे पास 4 आएगा और हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट भी है, ठीक है, सो जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंबाइन होने हैं। सो लेट्स से कि इसके आगे एक और न्यूरॉन है जो कि इन दोनों की आउटपुट को लीनियरली कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों की आउटपुट को लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे आके वो 4 को रिकग्नाइज कर लेगा कि इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है जी। अब सो दिस इज दैट्स व्हाई, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स शेप है, तो पहली लेयर जो है वो उसके बेसिक यूनिट्स को लर्न कर लेती है, उससे अगली लेयर उनकी बेसिक लीनियर कॉम्बिनेशन को लर्न कर लेती है, उससे अगली लेयर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लर्न करती है, एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस मल्टी लेयर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को लर्न करते हैं। दैट इज लाइक वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्सिटी को जब आप बढ़ाते हैं मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज हाउ मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन वुड एक्चुअली कैन बी लुक्ड एट, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये देखें कि अगर डिफरेंट लीनियर, जैसे 1 अगर आएगा तो उसमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट आपके पास आएगी, अगर 2 आएगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बनेगी या इस लेयर में बनेगी वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बनेगी। अगर आपके पास 5 आता है तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशंस यानी डिफरेंट न्यूरॉन्स फायर होंगे इन ऑर्डर टू जनरेट 4। अगर मेरे पास इनपुट पे 4 आता है तो हो सकता है ये 2 न्यूरॉन्स
4 आता है तो ये 2 न्यूरॉन्स फायर हों और फिर ये 2 न्यूरॉन्स फायर हों और ये न्यूरॉन फिर फायर होगा, लेकिन हो सकता है बाकी न्यूरॉन्स फायर ना हो, राइट? व्हेन आई से लर्न, तो लर्न का मतलब ये है कि द वेट्स विल बी एडजस्टेड। सो जब भी मेरे पास इनपुट के ऊपर इस तरह की शेप आएगी तो ये वाला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक एक्टिवेट का मतलब होने का मतलब ये है कि इसके जो भी इसके जो इसकी जो फायरिंग स्ट्रेंथ है, इसकी जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है? एंड दैट व्हाट इट नहीं, यहाँ पे यू विल हैव ऑल अल्फ़ाबेट्स। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि एक न्यूरॉन उस वक्त फायर होगा जब मेरे पास लेट्स से 5 आएगा, एक न्यूरॉन उस वक्त फायर होगा जब मेरे पास 6 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मेरी आउटपुट के ऊपर जो है ना वो हिडन लेयर्स की तादाद, न्यूरॉन्स की तादाद 10 हो जाएगी। यहाँ पे लेट्स से आई डोंट नो, यहाँ पे हो सकता है M हो, यहाँ पे हो सकता है P हो, वी डोंट रियली नो कि यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स के साथ मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो बेहतर आएगी, राइट? सो आउटपुट के ऊपर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आउटपुट क्लासेस अब मेरे पास 10 हैं, 0 इज वन क्लास, 1 इज अनदर क्लास, 2 इज अनदर क्लास, तो इसलिए मेरे पास आउटपुट के ऊपर 10 न्यूरॉन्स आ जाएंगे। इट्स 10 न्यूरॉन्स आएंगे, लेकिन इट वुड बी ऑब्वियसली अ सिंगल लेयर, ठीक है? आउटपुट लेयर वुड बी ऑब्वियसली अ सिंगल लेयर, क्योंकि वो आउटपुट है और उसके बाद देयर इजंट एनी आउटपुट एट ऑल। हाँ, वो अब शफीर रहमान पूछ रहे हैं कि जी आउटपुट के ऊपर आपके पास सिंगल आउटपुट क्यों नहीं है? सिंगल आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स नो मोर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है? इट हैज बिकम अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम। तो मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए मैं एक न्यूरॉन से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ये देखना है कि 4 है, 5 है, 9 है, 8 है, जो भी है वो यहाँ पे मेरे पास, तो अगर 4 होगा और इससे पहले भी लेट्स से कि एक न्यूरॉन वन वाला भी है यहाँ पे, तो अगर 1 होगा तो ये न्यूरॉन फायर करेगा, अगर 2 होगा तो दूसरा न्यूरॉन फायर करेगा, अगर 3 होगा तो तीसरा न्यूरॉन फायर करेगा। बाकियों की जो आउटपुट है वो काफ़ी कम होगी, सिर्फ उस न्यूरॉन की आउटपुट ज़्यादा होगी। तो अगर मैं सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो सिग्मॉइड फंक्शन में यू नो कि द वैल्यू वुड वेरी फ्रॉम 0 and 1, तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास इनपुट के ऊपर 4 आ रहा है, ठीक है, तो सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, इस अगर मैं सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 4 की आएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 4 की वैल्यू 0.9 आ जाती है, 1 की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, 5 की वैल्यू लेट से 0.3 आ जाएगी, 6 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है ना जिस न्यूरॉन की मेरे पास आएगी, दैट विल बी माय आउटपुट क्लास, ठीक है? तो सिग्मॉइड फंक्शन क्योंकि 0 और 1 में मुझे उसको आउटपुट नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आउटपुट करता है बिटवीन 0 and 1। तो उस सूरत में मैं देखूंगा कि कौन सा न्यूरॉन मैक्सिमम आउटपुट कर रहा है, ठीक है? तो इस केस में लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं 4 इनपुट करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास न्यूरॉन 4 जो यहाँ पे आउटपुट पे है उसकी वैल्यू अगर सबसे ज्यादा आती है, तो आई विल से कि अच्छा ये वो आउटपुट क्लास है मेरे पास। अगर बाकियों की अगर 2 की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? अगर लेट्स से कि मेरे पास एक एक आई ड्रॉ इट अगेन, अगर मेरे पास x1 to xn है और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, और आउटपुट पे मेरे पास ये 3 न्यूरॉन है, लेट्स से कि मैं अल्फाबेट 1, 2 और 3 को ही रिकग्नाइज कर रहा हूँ, और ये जो मेरे पास नेटवर्क आया है इसमें 1 की वैल्यू लेट से मेरे पास 0.1 आ जाती है, 2 की वैल्यू 0.4 आ जाती है और 3 की वैल्यू 0.4 आ जाती है, लेट्स से। तो अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ आई विल नॉट बी एबल टू डिसाइड, मैं ये कहूंगा या ये 2 है या 3 है, 2 और 3 में फर्दर डिस्टिंक्शन मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए हम, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान हमें वैल्यूज चाहिए, इसलिए हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं। परसेप्ट्रॉन लर्निंग के अंदर सिग्मॉइड फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग दिस आई विल अपलोड अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा ख्याल है अभी मैंने वो अपलोड नहीं की, यू शुड डेफिनेटली सी दैट वीडियो। इट एक्सप्लेन्स ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड ग्राफिकली, और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से जो है ना, और बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से वो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल।
and that would also form the basis of deep learning. ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देख लें, it's not a very long video, I'll upload that. तो अगर आप वो देख लें तो you will see कि how a neuron or a multi-layered perceptron or a neural network actually works. It explains in a very nice manner. So I'll upload that video also. वो भी आप उसको देख लीजिए. Yes, Zafir, it's basically the output of a sigmoid. Yes, it's not an output of a hard threshold step function. It can't be, क्योंकि वो तो 0 और 1 ही output देगी. अच्छा, coming to the learning part, I mean, this is let me just come to the learning part of a perceptron. ठीक है, इसमें मैंने slides upload कर दी हैं. उसमें I think it's not that difficult to go through. आप वो स्लाइड्स को देखें, उसमें there is a worked example of how it actually learns. तो स्लाइड्स के अंदर भी ये एग्जांपल मौजूद है, और ये एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है which is hardly I think 10 आप वो भी उसको भी देख लें. That those videos would explain the working of all these solved example. इसका I'll simply explain the concept behind that learning algorithm that is used in perceptron. अच्छा, last time we had this discussion कि learning कैसे हो रही होगी, तो let me just explain that very quickly कि perceptron learning कैसे हो रही होती है. perceptron learning का मतलब ये है कि हमने weights, appropriate weights को निकालना है. ठीक है, appropriate weights निकालने के लिए what you will do is that the very first thing that you will do here is that you will initialize the weights. ठीक है, initialize the weights, आपने weights को initialize करना है. ठीक है, initialize weight आप कैसे कर सकते हैं? You can do them randomly. I mean, you can randomly initialize those weights. ठीक है, रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स वुड टेक प्लेस. जब आप रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आउटपुट है, obviously those weights are not the desired weights at the present form, क्योंकि आपको वो आउटपुट ठीक नहीं दे रहे होंगे. लेट्स से कि मेरे पास मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास x1 x2 दो इनपुट्स हैं, सिंपल एग्जांपल, और मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए वो मेरे पास है, और मेरे पास जो मेरा जो नेटवर्क आउटपुट दे रहा है वो है. सो यहाँ पे मैं नेट आउट यहाँ पे लिख देता हूँ. तो नेटवर्क आउटपुट जो मेरे पास दे रहा है वो ये है. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर मेरे पास x1 1 है और x2 भी 1 है, तो मेरे पास आउटपुट 1 आनी चाहिए. ठीक है, और अगर मेरे पास x1 0 है और x2 1 है, तो मेरे पास आउटपुट जो है वो लेट्स से कि 0 आ जाए. ठीक है, और अगर ये 1 है और ये 0 है, तो मेरे पास आउटपुट 0 आ जाए, और अगर ये दोनों 0 हैं तो मेरे पास आउटपुट 0 आ जाए. तो लेट्स से कि ये मैं एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम में लर्न करना चाह रहा हूँ. अच्छा, इस केस में अगर मैं इसका एक इक्वेशन बनाता हूँ, और इसमें ऑब्वियसली मैंने एक बायस ऐड करना है, विच यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर के बायस आपने ऐड करना है. वो x0 एक कांस्टेंट इनपुट है और उसका भी एक वेट होगा. तो लेट्स से कि मैं इसका अगर एक इक्वेशन बनाता हूँ, तो दैट वुड बी w0 प्लस w1 x1 प्लस w2 x2. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनती है. अब इसमें क्योंकि मैंने रैंडमली ये वेट्स को इनिशियलाइज किया है, तो रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स के साथ मेरे पास हो सकता है ये जो डिजायर्ड आउटपुट है ये ना आए. अगर ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगी, तो मैं अपने वेट्स को एडजस्ट करूंगा ताकि मेरे पास जो नेट आउटपुट है, अच्छा हो सकता है नेटवर्क आपने रैंडमली इनिशियलाइज किया और एक्चुअल आउटपुट आपकी 1 आनी चाहिए थी लेकिन 0 आ गई. यहाँ पे 0 आनी चाहिए थी, 0 ही आ गई. यहाँ पे 0 आनी चाहिए थी लेकिन 1 आ गई, और यहाँ पे 0 आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे आपके पास लेट्स से कि यहाँ पे 0 आ गई. तो आपने दो आउटपुट्स जो आपकी आ रही हैं वो एक्चुअल आउटपुट से मैच कर रही हैं, और दो जो हैं वो आपकी एक्चुअल आउटपुट से मैच नहीं कर रही. ठीक है, तो जब आप, तो दैट मीन्स कि योर नेटवर्क, योर परसेप्ट्रॉन आउटपुट्स आर नॉट इन लाइन विद द एक्चुअल आउटपुट. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन वेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, वेट्स को चेंज करना पड़ेगा. जो भी रैंडम इनिशियलाइजेशन की है उसमें आपने वेट्स को चेंज करना है, और वो आपको वेट्स को चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए चेंज इन वेट्स इज प्रोपोर्शनल टू
the error that has been generated, in your network, ठीक है, and your input. So it's proportional to this error and your input size. अच्छा, क्योंकि this is a proportionality here, तो आप इस proportionality को equality में convert करेंगे, तो you will have to add a constant. So we add a constant which is called eta times error times your input, right? So this is the equation. ये eta जो है, this is called the learning rate, right? This is called the learning rate. That means के आपने यहाँ पे एक factor add करना है. If this factor could vary from 0 to 1. If this factor is 1, that means कि आपकी speed of change of weights बहुत ज़्यादा होगी. Or if it is 0, तो everything will be 0. So that means कि you are not changing your weights anymore. ठीक है. So ये जो learning rate है, that learning rate is a constant that you'll have to determine in order to find out the change in weights. Generally इसकी value आप 0.1, 0.2 या 0.3 तक रखते हैं. Close to 1 नहीं रखते, क्योंकि close to 1 अगर आप रखेंगे तो आपके weights बहुत drastically change होंगे. So you don't want that to happen. You want that your weights should change at a reasonable pace. इसलिए इस constant की value आप जो है वो 0.1, 0.2 इस range में रखते हैं, ताकि the change in weights are slower and you can run it for more iterations. Larger iterations के साथ, I mean larger value of eta के साथ अगर आप करेंगे, तो that your learning algorithm may not converge. That means कि आप appropriate weights हो सकता है find out ना कर सकें. So generally it's kept as towards the lower side. So 0.1, 0.2 की रेंज में आप इसको रखते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो. सो दिस इज द वेट अपडेशन फॉर्मूला. सो वेट अपडेशन फॉर्मूला आपका जो है ना, वो ये है. दिस इज हाउ द वेट्स आर एक्चुअली चेंज्ड. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज कि जो मैंने अपलोड किए थे slides, I'll just show you that slide, ताकि इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो हम we can go through this example. अच्छा, एरर जो है, एरर इज प्राइमरीली द डिफरेंस here. So let's say कि मैं अगर ये पहली एग्जांपल की बात करता हूँ, तो पहली एग्जांपल के अंदर ये पहली एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, तो what will be the error? Error will be the difference of these two. ठीक है, the difference of these two. So to actual minus the net value. तो पहले केस में 1 minus 0 होगा, so आपके पास error 1 आ जाएगा. दूसरे केस में आपके पास error 0 है, क्योंकि this is 0 minus 0, तो error 0 है. जब error 0 है तो आपका change in weights भी 0 हो जाएगा. ठीक है ना जी. यहाँ पे आपके पास 0 minus 1 है, so this would be -1 error आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे 0 minus 0 है, so the change will be 0. So इस केस में you will say that 2 times the weights will change and 2 times the weights will not change. ठीक है. So this is how the weight change thing will take place. I'll just show you. I'll just go to that relevant slides and I'll just show you an example there, ताकि ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए कि वेट चेंज कैसे हो रहा है. ओके. ओके. Right. Just bear with me.
Okay. I'll just share a new. So these are the slides that I've uploaded. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि this delta here is actually, this expression here is actually representing the change in weights. ठीक है जी. तो अगर ith weight को आपने change करना है, and this is about for perceptron, multi-layered perceptrons की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, या न्यूरल नेटवर्क्स की विद मल्टीपल हिडन लेयर्स उसकी बात नहीं कर रहा, ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है. तो अभी हम सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं. तो ith वेट को अगर आपने चेंज करना है तो आपने लर्निंग रेट वहां पे डालना है, वट एवर दैट लर्निंग रेट इज. टी ऑफ ई का मतलब ये है कि टारगेट वैल्यू क्या थी और नेटवर्क की आउटपुट क्या थी. ओ इज द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क. सो दिस इज द टारगेट वैल्यू जो कि एक्चुअल आउटपुट होनी चाहिए थी, और ये आपकी नेटवर्क की आउटपुट है, ठीक है. तो दोनों का डिफरेंस टाइम्स ith इनपुट, ठीक है. तो दिस इज हाउ दिस वुड एक्चुअली work. So let's take a working example. So यहाँ पे मेरे पास, so the bias has already been added. Let's say कि मेरे पास P1 to P4 4 inputs हैं और एक ये bias मैंने ऐड किया. इनके जो initialized weights थे वो ये हैं, जो कि 0.-0.5 है, 0.7 है P1 का, -0.2 है P2 का, 0.1 है P3 का, 0.9 है P4 का, and so on forth. So these are the weights. My output is either +1 or 0.1. ठीक है. +1 और 0.1 मेरे पास, सॉरी, +1 और -1, ये मेरी आउटपुट, ठीक है. तो या +1 आउटपुट आएगी या -1 आउटपुट आएगी, ठीक है. सो अब वो जो मेरा जो स्टेप फंक्शन है वो 0.1 में वेरी करने की बजाय -1 और +1 में वेरी कर रहा है. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये स्टेप फंक्शन अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक क्लास +1 है, दूसरी क्लास -1. सो हियर इज अ वर्किंग एग्जांपल. सो लेट्स से कि मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो P1 से P4 तक है, यहाँ पे X से रिप्रेजेंट हुआ है. तो X1 इज एक्चुअली P1 और X2 इज P2 एंड X3 is P3 and X4 is P4. तो इनपुट मेरे पास -1, 1, +1 and -1 है. सो दिस इज अ 2x2 इमेज है, यानी 4 पिक्सल्स हैं टोटल. जब पिक्सल ब्लैक है तो मेरे पास इनपुट -1 है, जब पिक्सल वाइट है तो मेरे पास इनपुट 1 है. तो ये X1 है, दिस वन इज X1 जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, ठीक है. सो X1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, X4 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, और 2 की और 3 की वैल्यू +1 होगी. तो दिस इज हाउ दिस वुड. सो आई कैन कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ माय नेटवर्क. द आउटपुट ऑफ माय नेटवर्क जो है दैट कम्स आउट टू बी S. सो S इज primarily the input multiplied by the weight plus input multiplied by the weight, input multiplied by the weight, and so on and so forth. तो यहाँ पे given these inputs or given these weights which are given here, I can find out the aggregated input. The aggregated input comes out to be -2.2 if I multiply all these respective weights with their inputs. ठीक है जी. सो मेरी नेटवर्क की आउटपुट -1 होगी क्योंकि दिस इज -2.2. तो दैट मीन्स के प्राइमरीली क्योंकि ये बाइनरी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं तो -2.2 वुड मीन -1. आई मीन उसके ऊपर हमने थ्रेशोल्ड किया हुआ है. तो एनीथिंग below -1 will be treated as -1 and anything above +1 would be treated as +1. तो इसलिए मेरे जो नेटवर्क की आउटपुट आएगी वो -1 आएगी. अच्छा, whereas I mean this is just a cooked up example, whereas if the actual output should have been +1, मेरे पास आउटपुट +1 आनी चाहिए थी, लेकिन जो नेटवर्क ने विद दीज वेट्स मुझे आउटपुट दी वो -1 थी. तो इसका मतलब अब मुझे वेट एडजस्टमेंट की जरूरत पेश आएगी. So I'll have to do the weight adjustment now. So this is how I'll do the weight adjustment. So zero weight bias का weight है. This would be eta. Eta is taken as 0.1 here times the target output minus the actual neuron output, perceptron output. तो perceptron की output -1 है लेकिन target +1 था.
So the error is 1 minus 1, so the error is actually in this case +2, क्योंकि अगर ये दोनों you can very easily calculate times मेरे पास जो 22 की इनपुट है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है, into 0.1, so that gives me a weight adjustment of 0.2. इसी तरह से इनपुट 1 के लिए मेरे पास वेट एडजस्टमेंट इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, so this is the weight adjustment. इनपुट 2 के लिए वेट एडजस्टमेंट ये आएगी, इनपुट 3 के लिए exactly in the same fashion I can calculate the weight adjustment. So these are the changes in the weights that I have to make, and then I can calculate the new weights by adding that delta to the previous weights. So delta previous weight for the bias was minus 0.2, minus 0.5 plus the change that has been calculated. So if I do those changes, you will see कि ये नए set of weights मेरे पास ये आएंगे, and this is with the new set of weights that I've got. अगर इन set of weights के साथ मैं अपनी output calculate करता हूँ, तो अब आप ये देखिएगा कि पहले minus 2.2 output आ रही थी, अब minus 1.2 आ रही. That means कि the number is increasing, and if I repeat this process multiple times, I'll end up close to 1. So that has to be repeated multiple times in order to reach the desired output. ठीक है? So this is how this would actually continue. So you can very easily see कि weight adjustment करने से आपका जो error है ना, वो अब इस केस में कम होता जा रहा है, ठीक है. So you are moving more closer to +1, क्योंकि आपकी desired value output जो थी ना वो +1 थी इस केस के अंदर, desired output +1 थी. तो पहले आप -2.2 पे बैठे हुए थे, अब आप -1.2 पे आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि उसका जो गैप है ना वो कम हो रहा है. अगली आइट्रेशन के अंदर ये हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और वो आप और उससे अगली आइट्रेशन में हो सकता है ये 1 के करीब चली जाए. So you will stop at that point when you are very close to +1, or when you have reached +1. So this is how this process will primarily continue, right? So I think there are a few questions. Let me just go to the questions and see. There are two x here, x1 and x2. Which of them will be selected as our input value x in the model? What would 0 be treated as? Actually, I couldn't understand the question here. कि आप question क्या पूछना चाह रहे हो? If you can elaborate it further. You said that there are Hamza, that there are two x here, x1 and x2. Which of them will we select as our input value x in the model? अच्छा, अगर x1 और x2 दोनों आपके inputs हैं तो you will have to select both of them, ठीक है. आपने x1 में से या x2 में से कोई एक select नहीं करनी, हो सकता है आपको दोनों select करनी पड़े, ठीक है. तो that would be अच्छा. Furqan is actually asking कि आप ये ईटा की वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं. अगेन आई एक्चुअली डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, क्योंकि देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एज सच व्हिच वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ ईटा. ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, आप इसको थ्रू ऑप्टिमाइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं. इनिशियली यू हैव टू डू इट थ्रू हिट एंड ट्रायल, बट द रूल ऑफ थंब इज कि यू कीप इट एज लो एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल, ठीक है जी. अच्छा जी, तो right, so these slides are there, और उसके साथ एक वीडियो भी है, और वो वीडियो भी आप देख लें. जस्ट विद वर्ड ऑफ कॉन्शियस, जो perceptron लर्निंग की जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर वो थोड़ा सा अच्छा I'll वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तो वो स्क्रीन शायद फिक्स हो गई, सो शायद वो कुछ डिले हो जिसकी वजह से वो हो जाए. अदरवाइज I'll शेयर इट अगेन, ठीक है. तो क्वेश्चन ये था कि ईटा की वैल्यू आप बहरहाल कम रखते हैं, 0.1 0.2 के करीब आप वैल्यू रखते हैं, लेकिन देयर इज नो रूल एज सच जिससे आप ईटा की वैल्यू को डिटरमिन कर सकें, ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू थ्रू हिट एंड ट्रायल मैकेनिज्म. हिट एंड ट्रायल के थ्रू ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है. आई गेस लर्निंग रूल के बारे में भी वी आई होप everybody is clear about that. If there are any questions,
I can respond to those questions. Uh, yes, this is being done for a single neuron. Um, हाँ, अगर आपके पास मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन आते हैं, so this is a question again from हमजा, कि अगर आपके पास मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन आते हैं, मल्टी लेयर्स आती हैं आपके पास, तो you can see that this process in itself is not very say, I mean the calculations that you are doing through this perceptron learning rule, they become infeasible there. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स एंड एट टाइम्स आपके पास जो हिडन न्यूरॉन्स होते हैं, वो जैसे आजकल जो डीप लर्निंग अगर हम देखें तो डीप लर्निंग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हिडन न्यूरॉन्स आते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीप लर्निंग. डीप बिकॉज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट. सो जब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं, तो दैट वुड मीन कि आपको बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू reduce these or in order to make it more efficient, what is done is कि आप जो हैं वो इससे बेहतर मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करते हैं. एंड दैट मैकेनिज्म दैट यू अडॉप्ट फॉर लर्निंग is what we call as the gradient descent mechanism. ठीक है, तो आप gradient descent algorithm use करते हैं rather than this very simple perceptron learning. तो gradient descent algorithm जो है that is based upon the calculus approach, और calculus उसमें use होता है. It's little bit more complex, लेकिन it's easy to use, and it converges large networks with quite an ease. तो वहाँ पे ये मैकेनिज्म आप मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन में ये यूज नहीं कर रहे होते. मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स में या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जब आपके पास लेयर ज़्यादा हो जाती हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास वेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस सूरत में यू गो फॉर ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच. ठीक है, और ग्रेडियंट डिसेंट्स या लीस्ट स्क्वायर्स भी यूज़ करते हैं. तो उस सूरत में दैट अप्रोच इज़ यूज्ड, and we'll discuss that approach in our next meeting inshallah. So अब हमने बाकी के डिस्कशन में या बाकी जो कोर्स रह गया है उसमें हमने क्या करना है. एक तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट फॉर मल्टीलेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग कैसे होती है वो हमने देखना है. और वंस वी आर डन विद दैट, और उसकी कोई एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद मार्क आउट डिसीजन प्रोसेसेस हम करेंगे. एंड दैट मार्क आउट डिसीजन प्रोसेसेस that we'll be doing probably at that time we'll stop, and we'll not be extending our discussion further, क्योंकि उसके अलावा भी शायद एक आध और टॉपिक्स भी हैं, बट आई वाज थिंकिंग to stop after doing the MDPs, mark of decision processes. ठीक है, एक चीज. So there is another thing that I would like to share with you guys, और वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे ईमेल आई थी जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि द नंबर ऑफ एवेल्युएशंस जो हम या नंबर ऑफ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हमने प्लान की हुई हैं, उन ग्रुप एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया जाए. पिछली जो एक्टिविटी हुई है दैट वाज अ मॉक एक्टिविटी, रिमेंबर, उसमें इट वाजंट लाइक स्टैंडर्डाइज. तो अब जो एक्टिविटीज़ होंगी वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगी. ठीक है, एक चीज़. और वो एक्टिविटीज़ जो हैं एग्ज़ाम्स की फॉर्म में, आई मीन वो 2 मैक्सिमम 3, लेकिन 2 तो लाजमी इस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी होंगी. So we have at least something to grade upon. दूसरी चीज़ हम जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आपने असाइनमेंट्स भी जमा करवाई हुई हैं और उनका वाइवा भी ऑब्वियसली होना है. तो रादर देन हैविंग मल्टीपल वाइवास, कि आप असाइनमेंट 1 का एक वाइवा लें, फिर असाइनमेंट 2 का एक वाइवा लें, और फिर हम असाइनमेंट 3 का एक वाइवा लें, हम ये करेंगे कि हमने आपको असाइनमेंट्स दी, and then each one of you will have a single viva जिसमें हम कुछ असाइनमेंट 1 को भी असेस कर लेंगे, असाइनमेंट 2 को भी देख लेंगे. ठीक है,
तो इस तरह से रादर देन हैविंग मल्टीपल वाइवास, ताकि उसमें कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज भी आते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वील ट्राई टू डू इट इन एज लेस मीटिंग्स एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा उसका स्ट्रेस भी ना आए, ठीक है। अच्छा, so that was what I was actually thinking. If you have any opinion regarding that, just let me know, ताकि अगर इसमें किसी को कोई इशू है या प्रॉब्लम है. So what we are thinking is कि rather than having a separate viva for each assignment, हम ये कर सकते हैं कि we can combine those vivas into a single or a maximum of 2. उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे. Otherwise आपकी हर assignment के लिए जो है वो हमें एक viva रखना रखना पड़ता, विच माइट बी ट्रबलसम फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, अयान का क्वेश्चन ये है कि सिंस द फाइनल इज नाउ एन असाइनमेंट, हाउ मच ऑफ इट विल बी थ्योरेटिकली बेस्ड, बिकॉज इन माय ओपिनियन थ्योरी शुड आल्सो बी प्रायोरिटाइज। ठीक है, I mean programming तो definitely will be part of it, but at least some portion of that would be based on some written assignment, और उसमें obviously written में theory gets some weightage, so it won't be completely an application oriented thing, ठीक है। और उसमें obviously theory would also be given some weightage. हाँ, so n-1 policy in weekly assignments तो उस तरह से I mean बिल्कुल, if we'll be having more weekly assignments, then we'll definitely be going for n-1. लेकिन अगर होती 2 एक्टिविटीज हैं या 3 एक्टिविटीज हैं, तो अगर 3 एक्टिविटीज होती हैं तो then of course we can do away with 1, लेकिन अगर let's say 2 एक्टिविटीज होती हैं तो उस सूरत में हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा. Let's see how it actually proceeds, ठीक है। So if there is a level of comfort on your side, तो then definitely we'll have more. लेकिन अगर उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं या और कोई मामला आते हैं, तो then we'll have to restrict it, ठीक है। तो हाँ, definitely n-1 तो होगा, लेकिन that would depend कि कितनी weekly assignments हमारे पास आती हैं। अच्छा, there is another thing, हाँ, एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं, and I need not to like I need not to emphasize this again and again, and that is के अच्छा, ये क्या था, let me just read this and then I'll answer, come to what I'm saying. अच्छा, हाँ, ये एक पॉइंट है विच इज मेकिंग कि बोनस देने से जो है वो आप बोनस देने से डेडलाइन एक्सटेंशन का जो जो है वो जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है. आई एक्चुअली सी इट इन डिफरेंट वे. हाँ, अगर पेनलाइज किया जाए तो वो एक ज़्यादा मेरा ख्याल में प्रॉब्लमेटिक है. बोनस देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी ने पहले किसी असाइनमेंट के अंदर इफ द परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन गुड, तो वील बेसिकली बी कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट, ठीक है. और अगर वो पहले ही काफ़ी अच्छा और बोनस भी आ रहा है तो उसमें विदाउट पेनलाइजिंग एनीवन ये उसकी आता है. लेकिन उससे मीन के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि बोनस के लिए शायद वही ज़्यादा वही लोग जाएंगे want to actually compensate for what has been done earlier, ठीक है. लेकिन अगर किसी ने वक्त पे जमा करवा दिया है even in this situation, तो at least that individual should get some benefit without harming anyone else, ठीक है. तो अगर हम ये कहें कि जी आप पेनलाइज आप होंगे of not submitting on time, तो then
everybody gets penalized, ठीक है, जो कि सबमिट नहीं कराते। अब एक्सटेंशन का ये है कि पेनलाइज कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आपके लेट्स से कि अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं और अगर एक और बच्चा जो है वो अपनी मेहनत से वक्त पे जमा करवा देता है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं, दैट स्टूडेंट एक्चुअली गेट्स मोर विदाउट हार्मिंग योर 80%, और तो उस सूरत में आई थिंक इट शुड मेक एनी डिफरेंस। एनीवे, ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल में हसान उस वक्त आता है जब वी पेनलाइज, and we are not penalizing anyone for late submission here, or for while we are extending the deadline, we are preventing people from students from being penalized, ठीक है। बोनस वाला पार्ट जो है ना वो सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है ताकि if you can that for those students who have actually worked, I mean, were not able to do up to the mark in the previous assignment, they can have actual chance of doing it, firstly. Secondly, अगर किसी ने इन हालात के बावजूद वक्त पे जमा करवा दिया तो why shouldn't we appreciate that, ठीक है। तो that's an appreciation, वो किसी की बुराई नहीं है या किसी के मार्क्स हम कम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ दैट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और क्योंकि वो ज़्यादातर लोग आई मीन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग दैट, तो इसलिए मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं उसका आएगा। तो आई थिंक इट्स अ फेयर थिंग कि वक्त पे सबमिशन करने वाले को इवन इन दीज सिचुएशंस दे शुड गेट सम बोनस, ठीक है। या कोई एक्स्ट्रा काम करना अगर उन्होंने किया है तो they should get bonus for that. I mean that's fair enough. It's not penalizing anyone, ठीक है। It's an appreciation, so you should look at it from that perspective rather than कि हम किसी को penalize कर रहे हैं। बोनस का मकसद ही ये है कि penalize नहीं हम कर रहे। हाँ, अगर हम penalize कर रहे होते ना तो वो बात ठीक थी कि अच्छा यार वक्त पे जमा ना कराओ, 10% हम निकाल देंगे, या अगर ये करोगे तो 20% हम इसमें से डिटेक्ट कर लेंगे। दैट इज समथिंग विच वी आर नॉट डूइंग, ठीक है जी। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और है, हाँ वो ठीक है यार, अगर आपने पहले भी बहुत अच्छा किया हुआ है और अब भी आप अच्छा कर रहे हैं, एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर बोनस यू विल गेट दैट बोनस। आई मीन उसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको हम जानबूझ के नीचे लेके, ऐसा नहीं, ठीक है। सो जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए और अच्छा करने की पॉसिबिलिटी है। जिन्होंने किसी वजह से पहले अच्छा नहीं किया वो बोनस करके वक्त पे जमा करा के अब अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपनी पेस पे चल रहे हैं वो अपनी पेस पे चलते रहे, ठीक है। उनको हम खींच के नीचे नहीं लाएंगे या खींच के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो मीन साहब डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? तो हम चाहेंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूएशंस जो है ना वो हम, यानी evaluation उसी तरह से हो, लेकिन the number of times that you interact with उसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर सकें, ताकि जिनको कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, जिनको और मसाइल हैं, जो ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के मसले मसाइल हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। यू कैन लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस। जैसे हम ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 कि हम जो है एवेल्युएशन एक ही वक्त में कर लें, और फिर हम या असाइनमेंट 3 की भी एक ही वक्त पे टुवर्ड्स द एंड कर लेंगे, दरमियान में कर लेंगे, और फिर तो 3 एवेल्युएशंस करने की बजाय हम 2 एवेल्युएशंस ही करें, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हम एवेल्युएशन कर रहे हैं वो उतनी ही रहेंगे, ठीक है, वो कम नहीं होंगे। यानी 3 असाइनमेंट्स की एवेल्युएशन आपके पास होगी या 4 की होगी, लेकिन रादर देन डूइंग इट 4 टाइम्स वी विल डू इट 2 टाइम्स। दैट्स व्हाट वी आर सजेस्टिंग, ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी के। एंड दिस इज रिगार्डिंग एवेल्युएशंस। जो हमारी टीए ग्रुप्स के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। तो वो जितना भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। आई होप इट्स ऑब्वियसली उस तरह से तो ये नहीं चल रहा, लेकिन एनीवे I hope I'm trying to keep you as stress free as possible. लेकिन
uh, there are some basic minimum requirements that we have to meet. So for that, we'll have to at least do some evaluations and all that stuff. ठीक है, ठीक है जी. So any opinion, you can always send me an email. आप मुझसे बात कर सकते हैं. We can also have Skype meeting. So after we have done with that, फिर हम जो remaining weeks होंगे उसमें we'll meet once a week, और उसमें I'll be catering your questions. So as I told you, दो चीज़ें हमने अभी करनी है. एक मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स न्यूरल नेटवर्क्स में किस तरह से लर्निंग होती है वो देखना है, और फिर दूसरा मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस देखने हैं. जब भी वो खत्म हो जाएंगे, एट दैट टाइम वील end this lecture series, and we'll start with weekly say problem solving or question answer sessions. ठीक है, ओके जी, हाफिज.